दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ राइट नाउ। एंड व्हाट हैज हैपेंड इज समथिंग वेरी सीरियस, और इसके ऊपर सबको गौर करना चाहिए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि रशिया में एक स्टेडियम के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड इट हैज बीन कंफर्म्ड दैट इट हैज बीन organized by the ISI, and the main protagonists were Muslims. और अभी पता चला है कि ये तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के मुसलमान थे, एंड दे हैव हैड आउट ए वेरी डेडली अटैक एंड मोर देन 70 रशियंस हैव डाइड इन मॉस्को, एंड तकरीबन 200 घायल हो गए। नाउ ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग कि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है वर्ल्ड में कि व्हेनेवर देयर इज ए टेररिस्ट अटैक द फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटेड एट द मुस्लिम्स, कि ये मुसलमान ने ही किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंड ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको पहले नो डाउट अबाउट इट कि पहले अमेरिका ने इनको शय दी थी जब वॉर अफगानिस्तान में चल रही थी रशिया के अगेंस्ट विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। और ये टेररिस्ट अटैक बढ़ते गए। अल्टीमेटली अमेरिका पे कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसका नाम बड़ा फेमस है 9/11 टेररिस्ट अटैक, एंड इन विच मोर देन 3000 अमेरिकन डाइड। पर एक क्रेडिट है टू द अमेरिकन कि उस अटैक के बाद में तकरीबन 20 साल हो गए हैं, पर एक और टेररिस्ट अटैक अमेरिका में इस्लामिक्स नहीं कर पाए। This is because of the very strong profiling which has been done by the Americans of the Muslims. And they have been keeping a watch on all the Muslims. And some of the Muslims countries, visitors have been banned to enter America. रशिया के ऊपर जो अटैक तो बार बार होते ही रहते हैं, and that is because also of the weak need Russian policy. Now everybody is talking, आदमी पुतिन very strong आदमी है, ये है, but he is the man who is come in support of Hamas against Israel. और ये कोई भी रशियन मुझे एक्सप्लेन करे कि इसकी क्या लॉजिक है। And despite that support which is given to Hamas and talking against Israel in the latest war, Russia has been the butt of many attacks. Now Russia में एक significant Muslim minority है which is concentrated in the South Caucasus, Georgia, and lot of Muslim countries are nearby, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. ये पहले पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर होती थी, एंड दे वर कॉन्कर्ड बाय द ज़ार एंड दे ब्रोक अवे इन 1992। और ये जो लोग हैं यहाँ के, दे आर डिससेटिस्फाइड। अब क्यों डिससेटिस्फाइड है आई रियली कैनॉट से, बट द फैक्ट रिमेन्स कि एक सपना है, एक ड्रीम दे आर हैविंग, and this dream echoes all over the Muslim world. ये भी याद रखिए, whether it is Pakistan, South India, ईरान, टर्की, ये ड्रीम ये है कि there should be an Islamic caliphate, and इसमें ISI, दैश एंड अल कायदा स्टार है। एक टाइम पे जो अफगानिस्तान की तालिबान है, ये भी इसकी एक हिस्सा थी, पर अब शायद वो पीछे हट गए। एंड लॉट ऑफ मुस्लिम गवर्नमेंट्स भी जो है, इन्होंने सोचा कि हम अपनी ट्रम्पेट बजाएंगे, एंड उनको उन्होंने शय देनी शुरू की। इनमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेरर, और इन्होंने टेररिज्म को लेजिटिमेसी दी। बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे, उनको छाती से लगा लिया, और जो हाफिज सईद है जिन्होंने बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, उसको इज्जत से रखा हुआ है वहाँ। एंड इन एडिशन दे नर्चर्ड सो मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द JKLF, द दाइश मोहम्मद, द जैश मोहम्मद, और इनका एक ही काम था कि कश्मीर में हम दहशतगर्दी करेंगे, वी विल किल पीपल एंड डू ऑल दैट। पर जैसे आप जानते हैं, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता टेररिज्म, एंड टेररिज्म फैल जाती है। बहुत से एजुकेटेड
youth in America and Pakistan जो मुसलमान हैं, they have taken up to terrorism in pursuit of a dream. And dream ये है कि when you do all this दहशतगर्दी करते हो तो you will go to heaven, आपको जन्नत मिलेगी और वहाँ जाके आपको 72 हूरें मिलेगी. Now that part bear it in mind. पर जो कुरान में लिखा हुआ है is entirely different और उसकी interpretation जो है मेरे हिसाब से अलग है. Nowhere the Quran says to go and kill people to set up a Islamic state or something like that. पर ये interpretation दी है मुल्लास ने. But the fact is that this interpretation is there और ये जो है is the driving force behind this Islamic terrorism. बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स हैं और ब्रॉडकास्टर्स हैं जो अपने चैनल में ये बात कर रहे हैं. And I'm not the only one who's talking about it. And so many people from Pakistan also are saying that these terrorist attacks like the one in Russia now give the Muslims a bad name. अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोई भी अगर टेररिस्ट अटैक होगा the first suspicion is कि ये कोई मुसलमान होगा. Now this is not something to feel proud of. It's a matter of sadness that what Muhammad had envisaged has really not happened. And these terrorists are roaming all over the world. अफ्रीका में देख लीजिए, वहाँ भी ये ISIS चल रही है. The French are having a hard time there. मैंने जैसे आपको बताया एक ही कंट्री है वर्ल्ड में जिसने टेररिज्म कंट्रोल किया है, दैट इज अमेरिका. इंडिया में टेररिज्म कंट्रोल नहीं हो रही और उसका रीज़न ये भी है कि वी हैव गॉट वोट बैंक्स. कांग्रेस पार्टी जो है लेड बाय राहुल गांधी, इनकी कोई थिंकिंग इज टोटली अंग्रेजी का वर्ड है कॉकाइड. दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. और वो ये उनका एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को अपोज करो एंड हिंदुस्तान को अपोज करो. व्हाट इज हिंदुस्तान? एट द सेम टाइम इन द बार्गेन there are people like Ovasi who's sitting in Hyderabad and talking that the Muslims should have their own say. What say they want? I have not yet understood. They are in an independent country. They are given the right to vote. They are given the right to travel. They are given the right to start their own business, do anything, practice the religion. And still this man talks of they should get their rights. What rights? Now, in India, this divide is very extreme. And Russia, I'm very afraid to say that Putin, despite being such a strong man, has not been able to curtail this Islamic terrorism. Now, many people are talking of Islamophobia. अरे भाई Islamophobia क्यों होगा? And it is a reality because people are scared of the Islamists. They will come and create some bomb blast, kill some people or something like that. And एक स्टडी करिए कि जितने भी ये टेररिस्ट हैं, सम ऑफ देम आर हाईली एजुकेटेड. मैं इनके केसेस नहीं आपको बताऊंगा, यू कैन रीड ऑन द इंटरनेट कि बहुत से क्वालिफाइड आदमी जो थे, जो साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट्स किए हैं, दे वर इंस्पायर्ड बाय सम मुल्ला सिटिंग इन ए मॉस्क सेइंग दैट आपको आप जन्नत में जाएंगे इफ यू डू दिस टेररिस्ट एक्ट्स एंड इस्लामिक कलीफेट एस्टेब्लिश करो. एंड दे हैव बीन गोइंग एंड डूइंग इट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. And solution क्या है? I don't think there is any solution at all as it stands, because Western democracies and India, we don't want to do any dastardly act against the Islamists, and we still treat them with kid gloves. पाकिस्तान ने तो रियलाइज कर लिया मेरे ख्याल में कि ये जो दहशत फैलाने वाले लोग हैं, इनको जो उन्होंने पाला था, ये रियलाइज की वो उन्हीं से चल पड़े. अब देखिए TTKP जो है, जो पाकिस्तान तालिबान, जो टेररिस्ट अटैक दिन रात कर रहे हैं. अभी उन्होंने पूर्णपाल ने किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, फिर गवाडर में, एंड देयर इज नो एंड टू इट. एंड लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान ऑल्सो. देयर इज रिसेंटली ISI ब्रॉडकास्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आई थिंक in a bank, and maybe about 20 or 30 of the Taliban died who had gone to collect their pay. Iran is another country supporting terrorism.
and they feel कि हम हमास को support कर रहे हैं, इसराइल को हराने के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, not realizing that ultimately these people are going to turn on Iran itself. रशिया मैंने बताया, आप बहुत बड़ी गलती कर दी रशिया ने, and they should have taken a hard line stand against the Islamists, which they did take. And they were all the time playing double game, thinking that we're going to only oppose America. But America's priorities are very clear. उन्होंने क्लियर कर दिया है. अमेरिका की क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी ज़्यादा है कि एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स इन अमेरिका. और जिन्होंने ट्राई भी किया, कई लोग केसेस मैंने पढ़े हैं, these people were caught immediately arrested and sentenced to long terms in prison. जिंदगी भर बैठो आराम से. So this is what it is. And some countries जैसे ये देखिए आप कनाडा है, वहाँ भी इस्लामिक सेल्स हैं ISI के all over France, Germany, England, where France in particular, where the population is almost 10% Islamic. They are all people who have been called to Islam from Islamic states to work there, because the Europeans have a demographic problem. उनके पास young men नहीं है available for this job because the fertility rate of the European woman is low, so low. It's at some places 1 when the requirement is 2.1. तो gentlemen, ये बात आप और सोचिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है. एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली द थर्ड वर्ल्ड वॉर. पीपल आर टॉकिंग, नॉस्ट्राडामस ने बोला था थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, ये वो एंड ऑल दैट. आई थिंक द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज ऑलरेडी ऑन अगेंस्ट द ISI, Daesh and these people. Now most of the Muslim countries play a double game. Let's be very frank about it. जब हमास ने 10,000 रॉकेट्स इसराइल पे दागी और 15,000 इसराइली मर गए और 300 होस्टेज ले लिए, मैंने नहीं देखा कि किसी इस्लामिक कंट्री ने बोला हो कि ये गलत काम किया है. बट व्हेन द इजरायलीज रिटेलिएटेड एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग द हमास एंड किलिंग देम, एंड टिल डेट आई थिंक 32,000 Gaza Muslims have been killed. And now they are saying have ceasefire. No, ceasefire हमास के साथ कोई मतलब नहीं है. इट्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ब्रीच के स्पेस मिल जाएगा like the dragon hydra. So we have to be very careful what we do and think about it. Israel must be given tremendous support at the moment, but the Islamic world is playing a double game, as I've told you, and Pakistan is the biggest culprit. And now they are talking of terrorism and this thing and that thing. But how many of the Muslim nations have put pressure on Hamas to release the hostages? They should have been released unconditionally. It is not a principle of war that you take hostages. मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा क्लॉजविट से इतने बड़े जो पंडित हैं मिलिट्री हिस्ट्री के, उन्होंने ये लिखा हो कि आप होस्टेजेस ले लीजिए in a war, but this is what they are doing, and they be raping the women, all that. And then there are excesses from the other side also. And Americans are going and killing the leaders of Al Qaeda and all these people, and they're using drone attacks. But America की policy is also now changing, and I think Americans are getting little worried अभी आगे होने वाला क्या है. Because Europe जो है, मैंने आपको जैसे बताया, has got so many problems, they don't know how to solve it. And they are also a little scared of the Western Islamic world, and they are giving all sorts of credit to these people. And the anti-Semitism has been the cornerstone of European policy for 2,000 years. Hitler not an exception. Hitler to आया था. It is just a manifestation of the hatred which the Europeans have always had for the Jews. And that was, characterized by the creation of the character Shylock by William Shakespeare. Shylock is a Jew, and he was a very ruthless man who wanted his pound of flesh. So, gentlemen, what I'm coming to is that the only way you can deal with this Islamic terrorism is by a united effort from all the countries, and that includes the Islamic countries, Saudi Arabia and others. But it is not likely to happen because there's a big divide in the Islamic world. Iran is blowing its own trumpet. Turkey wants to be the leader of the Muslim world.
and Saudi Arabia and UAE are pragmatic. Saudi Arabia is changing, but it's not changing fast enough. Egypt, another country beset by terrorism, and then we have Afghanistan and then Pakistan. And now the sad part is that the Indian state also is like the soft belly, and it does not know how to deal with these people. I understand there are ISI terrorist cells all over South India, from Hyderabad, Chennai, Bangalore, everywhere. And what is the Indian government doing about it? And if you start taking action under the Preventive Detention Act against the Muslims, then there are people like Mr. Rahul Gandhi who would sit in the jeep and the head and start shouting that it's discrimination against the Muslims. Well, one day he may have to pay a very terrible price for this sort of nonsense which he's talking, and the other people also. I remember the Prakash Singh Badal and Sukhbir Singh Badal left the BJP, and one of the points they made was the CAA Act, which has been passed, should also include Muslims. And they forgot that the four Sahibzadas of Guru Gobind Singh were butchered by the Islamists. It's a very sad thing, but that is the fact. You can't forget history. Lessons of history have to be learned. And the Russians have all to learn. I'm very with the Russians in this very, very dastardly attack in Moscow. But then I think the Russians themselves have been going soft on Islamists in the hope that they will use them to fight America. I mean, you can't have any watertight compartments, and there's got to be no quarter given and none expected from these terrorist organizations which are giving Islam a bad name. As I said earlier, Islam is a wonderful religion, but then these are the people who are giving them such a great religion a bad name. That is because they are interpreting what is written in Islam in a way in which they feel it should be interpreted, which is not perhaps the truth. So, gentlemen, I think I will close now. This attack on Russia should be an eye-opening, a rather eye-opener to the people in the democracies, Africa, India, and even Pakistan, that you cannot run with the hare and hunt with the hound. That means आप नहीं डबल गेम खेल सकते कि एक तरफ से आप बोले जी टेररिस्ट जो है वो इंडिया को अटैक कर ले पाकिस्तान में, बट हमें छोड़ दे. इट्स नॉट हैपन लाइक दैट. एंड नाउ I think the danger is real. The Third World War, which Nostradamus talked of, is very much on. It is there. And the battle is between the extremists who profess the Islamic faith and the rest of the world. Let us see who will win. I cannot give any forecast on this at the moment, because victory can only come to the resilient person, to the dedicated person, the person who knows his audience. And let us see what happens. America has already shown a way. There's not been a single terrorist attack in America for the last 2 decades or more. And it's worth studying how they did about it. It would be a good idea if the French and the other people who face so many terrorist attacks, including India and Pakistan and Russia, realized how to treat and take action against terrorism. Gentlemen, I think I'll close now. Say goodbye to you all. I hope you like my video. Share it with your friends, and I'll look forward to further interaction with you. Bye-bye and God bless.